The function of organ and organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. What is homeostasis? That is keep balance in everything. Self-regulating process होता है by which organism tends to maintain stability. Now we are talking about coordination. Coordination is a process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. For example, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. The supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessitates an increase in our rate of respiration, heartbeat, increased blood flow via blood vessels. When physical exercises stop, the activity of nerves, blood, वेसल्स की एक्टिविटी लंग्स हार्ट किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल पोजिशंस. इस प्रकार जो फंक्शन होता है मसल्स का, लंग्स का, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, किडनी का एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज. इन आर बॉडी न्यूरल सिस्टम जो है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड हैं एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर. मतलब एक समय में कई कामों का होना, दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन. The neural system provide an organized network of point-to-point connection for quick coordinations, and the endocrine system provide chemical integration through hormones. So now we are talking about neural system. Neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई. The neural organization is very simple in lower invertebrates, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रा एक कंपोज नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का. एंड न्यूरल सिस्टम जो है वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड हुआ इंसेक्ट्स के अंदर. वहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया ऑल्सो एंड न्यूरल टिश्यूज़ ऑल्सो. एंड वर्टिब्रेट्स जो हैं दैट इज़ एव्स, एम्फीबिया, रिप्टाइल्स, मैमल्स, they have a well developed neural system. Human neural system divided into two parts, that is CNS and PNS. CNS, that is central nervous system. PNS stands for peripheral nervous system. In CNS, that is brain and spinal cord, which is a site of information processing and control. PNS, that is peripheral nervous system, comprising all the nerves of the body associated with CNS. The nerve fiber of PNS are of two types, that is afferent and efferent. Afferent, that is transmit impulse from tissue organ to CNS. टिश्यू से CNS तक लेके आते हैं. एफरेंट, दैट इज ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम CNS टू पेरिफेरल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. PNS divided into two divisions, that is somatic and autonomic. So somatic neural system, that is relay impulse from the CNS to skeletal muscles. Autonomic neural system, that is transmit impulse from the CNS to involuntary organs and smooth muscles of the body. Autonomic neural system is further divided into two types, sympathetic neural system and parasympathetic neural system. Next one is visceral nervous system. Visceral मतलब जो आंत होती हैं, that is intestine and all ये सब. तो visceral neural system is a part of PNS. ये PNS का part होता है that comprise the whole complex of nerve, fiber, ganglia and plexus. इसमें impulse transmit कैसे होती है? That means travel from CNS to viscera and from viscera to CNS. That kind of thing happens here. That's it.